And that's the story we are all witnessing since last 2 years, since COVID-19 pandemic hit the world. Everywhere there is a discussion of health, immunity, diet, antioxidant, detox diets, etc. through social media, through news channel and all the diet trends. And everyone is concerned about the health, maybe because of the fear of deadly virus. But the thing is, health has become the prime concern in this time. So in this video, I'm going to talk about Ayurvedic nutrition perspective. So let's start. You must have heard we are what we eat. And it's very true, we are what we eat because we built up this body out of the food only. And food is required for our day-to-day maintenance, day-to-day functioning. So our growth and maintenance is because of the food. And the quality of food determines the quality of health we are having. But Ayurveda believes we are what we eat, but more importantly, we are what we digest. And it's about this that I'm going to talk about in this video. तो इस वीडियो में मैं 3 simple examples बताने वाला हूँ. And every one of you fall in one of 3 examples. May not be 100%, but आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में ये कंडीशन को या मैं जो आपको कॉन्टेक्स्ट बताने वाला हूँ वो कॉन्टेक्स्ट को एक्सपीरियंस किया होगा. द एग्जाम्पल 1 इज आप ऑफिस में काम कर रहे हो एंड सडनली इट इज डिसाइडेड टू गो आउट इन द रेस्टोरेंट फॉर द लंच. आप और आपके 4 फ्रेंड्स मिलकर रेस्टोरेंट में जाते हैं एंड आफ्टर डिस्कशन यू डिसाइडेड टू ऑर्डर द चिकन करी, नॉन वेज आइटम. और आप फ्रेंड्स के साथ हो तो आपने थोड़ा ज़्यादा ही खा लिया. यू एंजॉयड द चिकन करी एट मोस्ट and you get back to the work. Now, after coming back to the work, you started feeling inflammation or hotness in your body, especially in the stomach. And most probably, next day morning, you will have a loose stool or the loose motion. और आपके बाकी 4 फ्रेंड्स को ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ. और ऐसा क्यों हुआ कि आपको स्टमक इन्फ्लेमेशन हुआ और बाकी फ्रेंड्स को, बाकी लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ? The answer lies in Ayurvedic perspective of nutrition. Now let's see the second example. आप दिवाली वेकेशन पर हो और आपको 7 दिन की छुट्टी है, होल वीक फॉर दिवाली वेकेशन. और आप घर पे हो तो बहुत सारी दिवाली के टाइम पे मिठाइयाँ बनी है, स्वीट्स बने हैं एंड योर ओनली ड्यूटी इज ईट एंड रेस्ट. तो पूरे वेकेशन में आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, बहुत सारी मिठाई खाई, बहुत सारे स्वीट खाए और बहुत सारा आराम भी किया. एंड नाउ इट्स टाइम टू गेट बैक टू द नॉर्मल रूटीन. और आपको पता चला कि सिर्फ एक ही हफ्ते में आपने लगभग 2 किलो वजन गेन किया है और आपके बाकी फैमिली मेंबर्स में ज़्यादा फर्क नहीं है, उनका वेट लगभग सेम ही है. सो दिवाली उन्होंने भी एंजॉय की थी, स्वीट्स उन्होंने भी खाए थे और रेस्ट उन्होंने भी किया था. सो व्हाई डज इट हैपन कि उनका वेट बढ़ा नहीं है और आपका वेट बढ़ गया? द आंसर लाइज इन आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव ऑफ न्यूट्रिशन. नाउ थर्ड एग्जाम्पल. आपको बहुत सालों से कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है और आपके घर में किसी को भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है और आप सेम फूड खाते हो जो आपके घर में बनता है. सब लोग सेम फूड खाते हैं, सेम इन्वायरमेंट में रहते हैं. सो व्हाई दिस इज सो? आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है और आपके घर में किसी को भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है. द आंसर लाइज इन आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव ऑफ न्यूट्रिशन. अब ये तीनों एग्जाम्पल को हम आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल था जिसमें आपको स्टमक इन्फ्लेमेशन हुआ था, स्टमक में हॉटनेस फील हुआ था. सो इन दिस केस योर बॉडी इज प्रिडोमिनेंटली पित्त डोमिनेंट और इन आयुर्वेदिक टर्म्स यू आर अ पित्त डोमिनेंट पर्सन. सो नेचुरली आपकी बॉडी में फायर एलिमेंट ज़्यादा है, आपकी बॉडी में हीट कंपोनेंट ज़्यादा है एंड बिकॉज ऑफ दैट यू नीड अ कोल्ड फूड इन योर डाइट. और अगर आप हॉट फूड लेते हो, स्पाइसी फूड लेते हो तो आपको इन्फ्लेमेशन का प्रॉब्लम होने वाला है. And now in the second case, you are the kapha dominant personality or a kapha Prakruti person. And in your case, your metabolic rate is slower than the normal people. And because of that, you put on weight very easily and very fast. जब भी आप बहुत सारा nutrient dense food खाते हो, तो because of slower metabolic rate, वो आपकी body में accumulate होने लगता है. And because of that, you gain lot of fat in your body and eventually आपका weight बढ़ जाता है. Now in third case, you are a Vata dominant personality. Now what is meaning of Vata dominant personality or Vata Prakruti? You naturally have a dryness in your body and constipation is natural tendency for you if you are not taking care of your Vata Prakruti.
और अपने मॉडर्न न्यूट्रिशन के हिसाब से मे बी कुछ डाइट ट्रेंड्स फॉलो किए होंगे, आपने फाइबर रिच फूड ट्राई किया होगा, वाटर का इंटेक आपने बढ़ाया होगा, बट फिर भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं हुआ. द प्रॉब्लम इज स्टिल देयर. इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव वाता डोमिनेंट पर्सनालिटी और आपको कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और फ्रीक्वेंटली प्रॉब्लम होता है. So what is happening with the waste that are not excreted through the body? So from Ayurvedic perspective, this is the undigested or improperly digested food that are still there in your stomach, especially in your intestine, और ये टाइम के साथ at minute level accumulate होते रहता है और ये intestinal wall को कवर करेगा और वो accumulation धीरे धीरे बढ़ता रहेगा at a minute level, but it's still there. और जब भी ये एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, वो इंटेस्टाइन के अलावा और बॉडी पार्ट्स में एक्यूमुलेट होना चालू हो जाएगा, एंड दैट विल क्रिएट द मेजर प्रॉब्लम फॉर यू. एंड इन दिस केस योर बॉडी विल वीकन डे बाय डे, एंड दैट विल क्रिएट इम्बैलेंसेस इन ऑल 7 टिश्यूज इन योर बॉडी. नाउ लेट्स सी द कफर डोमिनेंट पर्सनालिटी. बेसिकली कफर डोमिनेंट पर्सन में फैट एक्यूमुलेशन फास्ट हो रहा है, एंड विच इज अ नॉट नॉर्मल थिंग बिकॉज आवर बॉडी इज मीन टू बी लीनर. It's need to be slim and perfectly fit, and that's the natural state of the human body. But आपका metabolic rate slow है, तो आप थोड़ा ज़्यादा fat accumulate कर रहे हो, and which is not a normal thing. और जब भी ये होता है, this is not only a fat accumulation. With fat accumulation, धीरे धीरे आपके internal body channels को भी ये block करने लगता है, which is the undigested or improperly digested food, which is blocking your internal channels. For example, if these undigested food particles started accumulating in your body channels, it will create the problem of obesity, overweight, or maybe diabetic. Or in other case, whenever this accumulation is at artery level or in the veins, and it will start building the cholesterol in your veins, and that will obstruct the normal flow of the blood, and that will eventually create the disease condition associated with the heart. And for all those conditions, there is a term in Ayurveda, and this term is called as Aama. By definition, the Aama is the undigested, unabsorbed food particle accumulated in gastrointestinal tract and other subtle channels in the body and turn into sticky and foul-smelling substances called as Aama. And according to Ayurveda, Aama is the root cause of most of the diseases. And that's why we are what we eat, but more importantly, we are what we digest. अब आपके मन में सवाल होगा कि we all know that we get diseases because of the infection from bacteria, viruses and other microorganisms, and it's true, we get infection from the microorganism, but there is more element in it. For example, आपको कोविड टेस्ट के बारे में पता होगा. बेसिकली स्वैब होता है, कॉटन स्वैब होता है, उसको नाक में डालते हैं और उससे वो सैंपल कलेक्ट करके उसको इंक्यूबेट करते हैं लैब में, और अगर वायरस प्रेजेंट है तो वहाँ पर वो डेवलप होता है, वहाँ पर उसकी ग्रोथ होती है और वहाँ पर वो शो हो जाएगा. अगर सिमिलर कॉटन स्वैब से अगर हम अपने हाथ से या पैर से सैंपल लेते हैं या इवन टंग से सैंपल लेते हैं और उसको इंक्यूबेट करते हैं लैब में, तो यू विल गेट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ ऑन दैट स्लैब. एंड दैट्स बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट एवरीवेयर. इवन अपने टंग में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं. बट देयर इज अ नेचुरल डिफेंस सिस्टम functioning within us that protect us from all the infections, and that's called as the immunity. अगर immunity अच्छी है तो आपको कोई भी disease होने नहीं वाला है. And immunity is an intangible thing. Especially this time में सब कुछ immunity को लेकर हर कोई immunity बेचना चाह रहा है. Most of the advertising company or food company are claiming that their food are immunity building, immunity boosting foods. But the immunity is not the simple thing. Immunity is a all-round approach, and it comes from state of the balance in the body and not just eating supplements. And according to Ayurveda, this state of balance is when there is a balance between 3 doshas that are Vata, Pitta and Kapha, and 7 dhatus that are Rasa, Rakta, Mausa, Meda, Asti, Majja and Shukra, along with the good digestive capacity and clarity between mind, senses and the human body is called as health. So according to Ayurveda, this is the all-round definition of the health, and that state of the health will build immunity for you. And what Aama does is imbalance the state of the balance in all those parameters in the human body, and that will impair your immunity
and eventually you will fall for the infection. So in conclusion, अगर अमा फॉर्म नहीं होगा तो इम्यूनिटी सही रहेगी, और इम्यूनिटी सही रहेगी तो you won't get diseases or health infections. To sum up this, good digestion will ensure there is no ama formation in your body, और जब अमा नहीं बनेगा तब इम्यूनिटी इम्पेयर नहीं होगी, और इम्यूनिटी जब इंटैक्ट है, इम्यूनिटी जब अच्छे से फंक्शन कर रही है तो डिसीज नहीं होगा. सो इनडायरेक्टली digestion is the basis of the disease condition. And that's what Ayurveda says, we are what we eat, but more importantly, we are what we digest. And this concept is very fascinating, and it is the core basis of the Ayurvedic nutrition, or even why shall I call Ayurvedic nutrition? It's the basis of the nutrition. Whether you believe modern nutrition or Ayurvedic nutrition, the thing is going to be same for everyone. But this topic is comparatively unexplored because उसको commercialize नहीं किया है. हम टीवी पर प्रोटीन का ऐड देखते हैं, विटामिन मिनरल सप्लीमेंट का ऐड देखते हैं, इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड का ऐड देखते हैं, बट नो वन इज टॉकिंग अबाउट दिस हेल्थ कंडीशन, नो वन इज टॉकिंग अबाउट द डाइजेस्टिव कैपेसिटी एंड द आमा, बिकॉज इससे पैसा नहीं बनता है. दिस इज ऑन लाइटर नोट, बट दिस इज द रियल फैक्ट. एंड विद दिस थॉट आई हैव स्टार्टेड Ayurveda restaurant in the Pune under the brand name Aharyog. I have one Ayurvedic doctor in partnership, and Aharyog is probably world's first online Ayurveda restaurant that are based on Ayurvedic cooking principle and Ayurvedic nutrition principles. If you want to know more about Aharyog, you can visit www.aharyog.in and see all the details about Ayurveda restaurant. And if you are curious to know about what your body type, whether you are a Vata personality, Pitta personality or Kapha personality, there is a method to assess this. और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है. You can go there and check out. There is a test called Know Your Body Type or Know Your Prakruti. उस टेस्ट में बेसिकली सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होंगे. उस क्वेश्चन को आपको आंसर करना है, एंड एट द एंड आपको एक स्कोर मिलेगा. जो स्कोर होगा द प्रपोर्शन ऑफ वाता, पित्त एंड कफ इन योर बॉडी, एंड विद दिस यू विल गेट टू नो मोर अबाउट योर बॉडी एंड योर बॉडी टाइप. सो हैविंग सेड दैट, आई एम सुधीर सूर्यवंशी signing off. If you want more information about modern nutrition and Ayurvedic nutrition, stay tuned and stay connected.